if you connect a battery or a cell to a external load, then current will pass through the load, and in the process current will also pass through the internal structure of the battery, and that internal structure has a resistance. So a battery or a cell is denoted by this kind of figure. Yes. ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये जो अगर करंट इसमें से फ्लो करेगा, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो उसके ईएमएफ के इक्वल नहीं होगा. It could be more, it could be less. If you want exactly same potential difference across the terminals, you have to ensure that this current becomes zero. So EMF is also defined as the terminal potential difference in the case of no current flowing through the battery or the cell. Okay, but practically if you apply, you connect a load, there will definitely be a current. The purpose of a battery is to provide current to the external circuit or external load. ठीक है, तो जो करंट फ्लो करेगा दैट विल डिसाइड व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द टू एंड्स, इस एंड और इस एंड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द basis of the current flowing through it. Okay, now let's say you have a series connection where E1, E2, E3 up to En cells are connected in the same sense of polarity, that is plus minus plus minus plus minus, like that. Every cell has an individual internal resistance R1, R2, R3 up to Rn. Okay, so this load will have a current I. Okay, and this current will also pass through all the batteries, all the cells. Yes or no? होगा कि नहीं होगा? Now if I write the equation of KVL, Kirchhoff voltage law, for every element of the circuit. So we have n cell and one load. So there will be n terms. Every term will have EMF minus IR1. Yes or no? EMF of the cell and IR1 is the potential drop due to the internal resistance. All these potential drops plus the potential drop due to the load put together will be zero as per KVL. Now if you solve for this equation, you will get the value of I as E1 plus E2 plus E3 up to En in the numerator, and R plus summation of all the internal resistances. Now if you compare this equation with that of a single cell having EMF E and internal resistance R, you can easily make out that the term in the numerator is the equivalent EMF, and the term, the second term, that is the summation of all the internal resistance, is the equivalent internal resistance of the combination, series combination. Right? So if I replace this entire combination which is in parallel, which is in series, with one single cell of EMF equivalent and R equivalent, then E equivalent will be given by E1 plus E2 up to En, and R equivalent will be given by R1 plus R2 up to Rn. Right? Stop listening.
लिया सबने? हाँ सर। वेरी गुड। अब अगर इन केस आप लोग सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो बैटरीज को, एन बैटरी से कनेक्ट किया, बट सम ऑफ देम आर कनेक्टेड विद रिवर्स पोलैरिटी, as you can see here. So this cell, you can say first, second, third, they have their polarity positive, negative like that. Okay. तो सपोज करो इसकी E1 है, इसकी R1 है, इसकी E2 है, इसकी R2 है, इसकी E3 है, R3 है, बट यू कैन सी दैट पोलैरिटी रिवर्स है, माइनस प्लस होता है, बाकी सब जगह प्लस माइनस का। आ रहा है समझ में? तो हमने क्या कर दिया, कुछ बैटरीज को रिवर्स पोलैरिटी के साथ में कनेक्ट कर दिया, लाइक दैट यू हैव एन सच थिंग्स। सबकी अपनी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और ई एन आर एन ई एम एफ भी है। एंड नाउ यू विश टू फाइंड आउट इफेक्टिव ई एम एफ अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स। ठीक है ना? या तो इसके अंदर भी वही सेम फॉर्मूले लगेंगे व्हेन यू राइट दैट। ठीक है, यू आर अज्यूमिंग दैट करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन and you wish to replace this with one single equivalent EMF and equivalent internal resistance. So this is point A and this is point B. ये सब है। तो अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं तो E equivalent will be, if you apply the same logic, KVL and everything, you will get E equivalent as E1 plus E2 minus E3 plus E4 minus E5 whatever. तो जहाँ जहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स है वहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी सब जगह पॉजिटिव रहेगा। But when you calculate equivalent internal resistance, it will be as if they are all connected in series. So there will be no minus sign in the case of internal resistance. Only in the effective EMF, the equivalent EMF, it will be reduced. Because earlier all the batteries, when they were connected like this, they were cooperating with each other in pumping the charge in one particular direction, that is from right to left. Now, in this case, where some of the batteries are connected with reverse polarity, they will act against the pumping of charge of the rest of the battery, इसलिए effective EMF will be less. ठीक है, so only difference is you have to take care of the polarity sign as well. ठीक है, is this understood? ये लिख लीजिए।
अब इसके बाद में आता है पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, तो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड पैरेलल ग्रुपिंग? You have each arm with separate cell, and every cell has different EMFs, E1, R1, E2, R2, like that up to EN, RN. समझ में आ रहा है? And then all the terminals which are attached to one common conducting wire on the right, they are connected to the load R. दिख रहा है आपको कि नहीं? यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, दिस इज वन सेल, इसका EMF E1, R1, फिर इसके नीचे ये वाला, इसका है E2, R2 up to EN, RN. Now you will assume that the current flowing through each arm is I1, I2 like that. इससे करंट I1 फ्लो कर रहा है, इससे I2 फ्लो कर रहा है, like that IN is flowing from here, and we are assuming that all the currents are flowing from right to left. Okay? And the polarities are also in the same sense in all of them. Is it clear? Now all these currents, that is I1 plus I2 up to IN, that total current put together, that means if I add both the currents, all the currents, I1 plus I2 up to IN, that current will pass through here, that is capital I, through the load R. That same current I will again enter back at point B, and then will redistribute in I1, I2, I3 in different arms. Now if you wish to replace this entire setup of parallel combination or parallel grouping with one single cell having E equivalent as EMF and R equivalent as internal resistance, then what are these values? So now for that you have to again go back to the definition of the basic definition of EMF. EMF across a cell is that terminal potential difference when no current flows through the battery. Okay, this is the basic idea. Now we have to manipulate that definition in this situation. How we will manipulate that? We will replace that entire parallel combination with one single battery of EMF E equivalent and internal resistance R equivalent. And if I connect that same load R, it should give me same current I. Okay. Now E equivalent, that is EMF, is independent of the load. Even if I don't connect a load, the EMF of a cell or a battery is fixed. And EMF is defined when there is no current flowing through it. That means this current is zero. Let's say this current is zero. That is only possible if I remove the external load. And then if I calculate the potential difference, delta VAB, it will give me equivalent EMF. Am I correct? So when no current flows through it, if this current I becomes zero, then the potential difference of these two terminals will be the equivalent EMF. ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, तो अब हम क्या करेंगे? हम इक्वेशन लिखेंगे. व्हाट इज द इक्वेशन? Let us say each arm there is no load connected. We have removed the load. अभी हमने क्या किया? सारे बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, E1, E2 up to EN, and all these wires are connected to this point A, and this is point B. But there is no load connected across A and B. That means this current will be zero. ठीक है, अब देखो ध्यान से. फर्स्ट आर्म से करंट I1 आ रहा है, सेकंड से I2 आ रहा है, थर्ड से I3 आ रहा है. So now you can see that इस आर्म में करंट I1 है, यहाँ पे I1 प्लस I2 है, यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 है. ऐसे ऐड होते होते फाइनली
जब nth आर्म के अक्रॉस ये मूव करके जाएगा आई एम करंट भी ऐड हो जाएगा, तो फाइनली योर करंट विल बी व्हाट, 0। तो यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN शुड बी 0। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन टू फाइंड आउट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। तो मैंने इक्वेशन लिख दी। व्हाट इज द इक्वेशन इन द फर्स्ट आर्म? In the first term, if you move from right to left, there is first a drop. Yes or no? जब मैं यहाँ से इधर जाऊंगा तो there is a drop because of the internal resistance which is minus of I1 R1 and then there is a gain of E1. So this will be the EMF, equivalent EMF, because that is the potential difference across points A and B. And that is same for this as well, this as well as the last one. ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या किया है, हर आर्म का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना। इक्वेशन लिखी मैंने, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई मेरी, -I1 R1 प्लस E1 इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट। एनी डाउट? सेकंड में -I2 R2 प्लस E2 इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट। Now from these equations and such equations I can find out I1, I2 up to IN. Yes or no? And if I add all the terms of I1 I2 up to IN, I will get that as equal to 0. तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा LHS का एडिशन 0 आएगा और RHS का एडिशन में फर्स्ट टर्म्स को अलग लिख रहा हूँ, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस EN/RN, एंड सेकेंड टर्म्स में से E इक्विवेलेंट कॉमन लेके मैंने ये टर्म लिख दिया। व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू 0। So from this I will get E equivalent to be equal to this. And internal resistance of this combination will be which term? जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वही इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। That is, all the resistances are connected in parallel. 1/R1 plus 1/R2, like that. So from this equation you can calculate R equivalent, and from this expression you can calculate E equivalent. Understood? Any doubt? Now you can make the diagram.
ये लिख लिया सबने? हाँ सर। तो अब देखो, अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बैटरीज रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट हो गई। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, जैसे यहाँ पे E1 E2 ये सब कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जब आप इक्वेशन लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तो कुछ बैटरीज आपकी प्लस माइनस कनेक्ट है, कुछ माइनस प्लस कनेक्टेड है। ठीक है, तो उस केस में आपका क्या होगा, जिन जिन की पोलैरिटी रिवर्स कर दी है आपने, जैसे E1 E2 देवर विद द सेम पोलैरिटी बट E3 वर्स विद द रिवर्स पोलैरिटी, तो उसका टर्म नेगेटिव हो जाएगा। So like that you can see here, out of the n batteries, E3, EM, they are with the negative polarity or the polarity reverse. But En is positive battery आपका left में है, positive terminal left में है. So accordingly, the formula will change and only the terms in the numerator will change. The term in the denominator will always be addition. There will be no negative sign. This will come out as a resultant of solving this equation. इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे रिवर्स पोलैरिटी है वहाँ पे -E3 या -EM ऐसा आ गया। Rest of the calculation will remain the same. Is that clear? So if you have a random connection in parallel, random polarity attached, then you have to manipulate the formula like this. ठीक है, ये भी लिख रहा है।